Continuity, differentiability and integration all are the part of calculus. कैलकुलस की जो बिगनिंग होती है वो लिमिट से होती है. अगर हमें लिमिट समझ में आ जाती है देन आफ्टर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटिन्यूटी इजीली. देन आफ्टर इन डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन वी कैन सॉल्व इजीली. लिमिट हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. दे आर डिफरेंट रूल्स एंड ये you know very well about those, right? Today we will study about the continuity, right? So our first topic is why limit, continuity and differentiability are necessary. ठीक है ना? Limit, continuity and differentiability are important for being the building blocks or whole calculus. Calculus के ये main parts and the various that you will study in this chapter are itself very useful in various field life in physics. finding the electric field में आप और लिमिट और कंटिन्यूटी का यूज करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंशिएशन का यूज होता है. ग्रेविटेशन फोर्स में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है. फाइंडिंग द एरिया, किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. फोर्स में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. द एरिया फाइंडिंग an application of continuity function is used to by architects engineer to determine the need of material for construction. If you understand this chapter well, you will realize how good tools this chapter provides you. मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन कैलकुलस में कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. ये सारे के सारे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस की ये 52 डायमेंशंस हैं. पूरा कैलकुलस इन्हीं पर डिपेंड है. ठीक है, पूरा कैलकुलस हमारा इन्हीं पर डिपेंड है. इसके अलावा एक भी पार्ट आउटसाइड नहीं है. इन्हीं को मिला के हमारा कैलकुलस फॉर्म होता है. क्लियर? आफ्टर स्टडिंग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, after studying this chapter you will find new tools of mathematics which you will be exploring and maybe you will enjoy using it. मतलब आप लिमिट, कंटिन्यूटी का यूज करके आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका यूज भी कर सकते हैं. कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी है. You will feel comfortable with the calculative problems of the mechanics and electrophysics in physics which involves the concept of this chapter. Right? Next time this chapter will give you a different approach of thinking to solve a problem in physics and in general in academic research, which will make you more equipped to deal with the problems and hence confident. And obviously the chapter itself will help you to score some marks in the exam as it gets about 100 weight in GE mains में आता है. ठीक है ना? जनरल मीन ऑफ द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का एक जनरल मीन क्या होता है? जनरल मीन बोलते हैं ना हम कि आप बैठे कंटिन्यूस स्टडी करते रहे हैं, कंटिन्यूस किसी भी काम को करें, देयर शुड बी नो गैप, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आपके हर काम में. राइट? तो इसी तरह से ये कंटिन्यूटी का जनरल मीनिंग हम देखते हैं. वी सी कंटिन्यूटी इन वेरियस एस्पेक्ट इन द नेचर. ठीक है ना? एज कंटिन्यूट फ्लो वाटर इन रिवर. किसी भी रिवर पर जो वाटर होता है वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, वहां पर कोई ब्रेकिंग नहीं होता है. राइट? ऐसे ही है एज कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ में कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी होता रहता है. आपने देखा होगा कि ह्यूमन लाइफ में कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है. पहले इन्फेंट होता है, फिर धीरे का बेबी होता है, देन आफ्टर धीरे धीरे ओल्ड ग्रोथ होती है और देन आफ्टर हम ओल्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं. राइट? एज ए कंटिन्यूस मोशन ऑफ प्लेनेट्स. प्लेनेट का जो मोशन होता है वो भी सन के अराउंड कंटिन्यूस होता है. वो कभी भी रुकते नहीं है, ना ही उनका मोशन कभी डिसकंटिन्यूस होता है. ऐसे ही कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, जिनमें कभी ब्रेकिंग नहीं होती है. कंटिन्यूस मूविंग कार है, जैसे कार मूव कर रही है. ठीक है ना? फिर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन डिफाइन इट्स स्मूथनेस. वेयर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन डिफाइन इट्स स्मूथनेस. इसकी स्मूथनेस को शो करती है. राइट? और वी कैन से एट वेरी स्मॉल चेंजेस इन इनपुट वी गेट स्मॉल चेंज इन आउटपुट. ठीक है ना? जैसे हम किसी भी 9th या 11th क्लास में हम ग्राफ प्लॉट करते थे, जितनी वैल्यू इनपुट करते थे उतनी वैल्यू आउटपुट आती थी. ठीक है ना? तो वहां पर कंटिन्यूस ग्राफ फॉर्म होते थे, कोई भी चेंजिंग नहीं आती थी. इफ यू कैन स्केच अ कर्व ऑन ग्राफ पेपर विदाउट लिफ्टिंग योर पेन इवन वंस द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. ठीक है ना?
If you can sketch a curve on graph paper without lifting your pen even once, बिना उठाए पेन को आप जब कभी भी किसी सरफेस पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ को हम कंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर इट केयरफुल। जनरल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। यहाँ पर कुछ फिगर ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफ को देखकर हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, पहला ग्राफ दिया हुआ है, बीच में इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, सेकंड ग्राफ ये दिया हुआ है, थर्ड ग्राफ ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं हम जरा। फर्स्ट ग्राफ में जब वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड से आती हैं इस पॉइंट तक, ऐसी राइट हैंड साइड पर जाती हैं इस पॉइंट तक, तब वो वैल्यू दोनों तो इक्वल होती हैं, लेकिन की उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल नहीं होती। उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की तो इक्वल होती है, लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल नहीं होती है जो उस पॉइंट पर जितनी फंक्शन की वैल्यू है। मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस एफ, राइट। तो इस टाइप का फंक्शन होता है वो हमारा नॉट कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा यही सेकंड फिगर है हमारा, जिसमें दोनों कर्व इंफिनिटी पर जाकर मिलना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फर्क में पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, वो वैल्यू राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। दैट इज वी कैन से लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सी इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस, राइट। ऐसे ही हमारे थर्ड फिगर में लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड की पर जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर, और आर एच एस मतलब आर एच राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है लिमिट लगाने पर, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सी, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट उस पॉइंट पर, राइट हैंड साइड की लिमिट उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ कर्व है, देयर इज नो एनी ब्रेकिंग। यहाँ पर हर पॉइंट पर आर एच एल और एल एच एल उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। देयरफॉर वी कैन से दिस function or this curve is continuous। ठीक है ना। so from above we are watching that continuous graph has no jump or no break। जो continuous functions होते हैं उनमें ना तो कोई ब्रेक होता है और ना ही कोई जंप होता है। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस फंक्शन का है। और अगर इफ द ड्रॉन ग्राफ हैज एटलीस्ट वन ब्रेक और जंप वंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बीच में ब्रेक और जंप आ गए, बीच में ब्रेक है या जंप है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन में कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी प्लॉट फंक्शंस वैल्यूज generated in the laboratory or collected in the field, we often connect the plotted points with an unbroken curve। ठीक है ना। To show that the values of the function are likely to have been at the times we did not measure। In doing so, we are assuming that we are working with a continuous function, a function whose outputs vary continuously with the input and do not jump from one value to other value by taking on any values in the here। जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन में एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, y इक्वल टू एफ एक्स, गिवन है y इक्वल टू
राइट। y इक्वल टू x गिवन है। अब यहाँ पर हम x की जितनी वैल्यू पुट करते हैं हमें y की वैल्यू उतनी ही मिलती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी चेंजिंग इनपुट में होती है उतनी चेंजिंग आउटपुट में होती है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस कर्व हो गए हैं, कंटिन्यूअस फिगर हो गया, ठीक है। नाउ we will study cases of the continuity. There are two cases of the continuity. First होता है continuity at a point, second होता है continuity in an interval, ठीक है ना। continuity at a point, second होता है continuity in an interval, right। तो continuity of a function at a point we have to pause. Man, I'm getting potholes. Don't waste your money on that one, and that's removable. Woo, boys, that's a jump. Mom, when are we ever gonna get to 2? Are we there yet? In a previous lesson on functions, a function was defined as a way to analyze two unrelated sets of numbers. By now you should also know that a function could be linear or nonlinear. However, because by definition a single linear function runs in one direction only, towards positive and negative infinity, you don't have to find the limits of linear functions. Therefore, we'll concentrate our analysis on nonlinear or curved limits of functions. Limits are found all around us in both the physical and abstract. For example, highway lanes are all of the same width. This of course puts limits on how vehicles are designed. But the limits of functions are of the abstract type. The limits of functions are defined according to how the curve of an equation changes direction. For example, this equation, when plotted, gives us a curve that moves down from left to right. It hits a low point and then keeps moving from left to right, but this time going up. As the curve moves, and because it is a curve, the slope of the curve changes from point to point. As it moves, if the points are close together, the change in the slope is small. But if the points are wider apart, then the change in the slope is large. So just as the coordinates of each point define the curve, the slope at any point of the curve defines the limit of the curve. Now, because tangents are perpendicular at the point of contact of a circle, and it follows that any curve could be made part of a circle, then a tangent at any point of the curve is really the slope of the curve at that point. And the peculiar thing is that the tangent and slope changes at every point. And you ask, who cares? Well, there is great interest by a lot of people in knowing or predicting when things are about to change. Predicting change is the most important part of making decisions. So limits are important because limits in a dynamic, changing environment tell us that things are about to change. You see, we change because we reach a limit. We have to go in another direction because we can't go any further. So limits and change go hand in hand. As we study nonlinear functions, we must understand limits. The first person to understand limits and directional change was Isaac Newton. As he studied the gravitational pull of the Earth and other physical curiosities, remember, gravity is a non-linear phenomenon, he generated at the same time
the mathematics needed to explain it. This is how he got around to discover differential calculus, which some academics claimed it was improperly named. Some call it the math of change, and still others call it slope finding. In any case, the study of calculus begins with the limits of non-linear functions. The most popular example used to show abstract limits is the tangent. But before we get to the tangent, there is of course the secant. This explanation of limits uses a moving secant that turns into a tangent. The idea is to find the linear equation of the tangent at a particular point of a parabola. The parabola we will use is y equals x squared. The function of this parabola has the vertex at the origin and is bisected by the y-axis. So it is the simplest parabola you could use. The slope of the tangent we will find is the one at point 1, 1. As you can see, in the parabola y equals x squared, when x equals 1, y equals 1. So it fits. The parabola crosses point 1, 1. Anyway, if we pick 2 points on the parabola and draw a secant, the slope is found using the traditional slope equation where the difference of y over the difference of x yields the slope. As we make the slope smaller by getting closer to point 1, 1, the slope gets smaller. Let's look at the diminishing values of the slope. First, we use the table to keep track of the x and y value. We already said that when x is 1, y is 1. And if we use 2, when x is 2, y is x squared or 4. Now for the smaller value. When x is 1.5, y is 2.25. And when x is 1.1, y is 1.21. And when x is 1.01, y is 1.0201. And when x is 1.001, y is 1.002001, and so on. Let's now find the slope of the first secant made by points 1, 1 and 2, 4. Substitute the values in the equation, and 4 minus 1 is 3, and 2 minus 1 is 1. The slope of the first secant is 3. This table shows the values of the diminished. Notice that the slope gets smaller and smaller, but will never reach the value of 2. We can also do the operation by using points coming from the underside. Coming from the bottom, the slope gets larger. This table shows how the slope coming from below gets close to 2, but never reaches 2. This begs the question, why don't you use the obvious point 1, 1 to find the slope? Well, if we use 1, 1, the equation turns into 0. We don't want that, and this is where limits become important. We can get as close as we want with the slope from the top and bottom, but not to the point itself. That's the limit of the function. Well, anyway, but by now you must have realized that the slope of the tangent at 1, 1 has to be 2, because that is where the limit is heading. Therefore, we can now write the limit equation, limit of the function x squared as x approaches 1 equals 2. Now, by using the y-intercept equation, y equals mx plus b, and because the slope is 2 and the y-intercept is -1, the equation of the tangent is y equals 2x minus 1, where 2 is the slope and -1 is the y-intercept. Friends, now we have to study continuity of a function at a point, right? Let f be a real function on a subset of the real numbers, and let c be a point on in the domain of f. Then f is continuous at c. मतलब यहाँ पर दिया हुआ कि कोई भी एक पॉइंट c है जो f के डोमेन में लाई करता है, राइट? f के डोमेन में लाई करता है, तो लिमिट
x tends to c fx equal to fc, लिमिट x tends to c fx equal to fc, मतलब उस पॉइंट पर जो लिमिट होगी वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी. Try to understand further. Let f be a real function on a subset of the real numbers and let c is a point in the domain of f. Then f is continuous at c. Therefore, limit x tends to c fx equal to fc. Right? उस फंक्शन पर जो लिमिट होगी वो उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी. राइट? If the left hand limit, right hand limit and the value of the function at x equal to exist and are equal to each other. ठीक है ना? So that is also a condition of a function to be continuous at a point, that is limit x tends to c minus fx equal to fc equal to limit x tends to c plus fx. LHL equal to RHL equal to value of the function at that point. Right? उस पॉइंट पर लिमिट LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस सारी इक्वल होनी चाहिए. राइट? Continuity in an interval. A function f is said to be continuous in open interval a comma b if f is continuous at each and every point. मतलब ओपन इंटरवल a comma b के एवरी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. राइट? सेकंड पॉइंट है अ फंक्शन f is said to be continuous in closed interval a comma b if क्लोज इंटरवल a comma b है, f is continuous in the open interval a comma b, ओपन इंटरवल a comma b में कंटिन्यूस होना चाहिए, f is right continuous, that is limit x tends to a plus of fx equal to fa. राइट? मतलब RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल होनी चाहिए और एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि LHL की वैल्यू भी पॉइंट बी पर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर कि RHL राइट एफ ए के इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए, और LHL एफ बी के इक्वल होना चाहिए. दैट्स क्लियर? नेक्स्ट है रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक? रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूस होने की, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है मगर उसके कर्व में अगर कोई भी जंप आ रहा है या ब्रेक आ रहा है देन दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. राइट? तो उसके कुछ रीजंस होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं. If fx is not continuous at x equal to a, we say that fx is discontinuous at x equal to a. Right? So there are following possibility of the discontinuity. LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट होती हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती हैं. राइट? LHL और RHL दोनों इक्वल होती हैं, एग्जिस्ट होती हैं बट इक्वल नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट है हमारा कि LHL और RHL एग्जिस्ट तो होती हैं और इक्वल भी होती हैं लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती हैं. राइट? और थर्ड पॉइंट है कि एफ ए डिफाइंड नहीं होती है. तो हमारे पास तीन कंडीशन है. LHL और RHL दोनों की वैल्यू पता होती है लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती हैं. सेकंड होता है कि LHL और RHL दोनों इक्वल होती हैं लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शंस की इक्वल नहीं होती है. थर्ड केस हो सकता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड ही ना हो. राइट? वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड ही ना हो. तो हमें ये सारे केस ध्यान रखने हैं. राइट? देन आफ्टर ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें इस ग्राफ की स्टडी करनी. राइट? At least one of the limits does not exist. Geometrically, the graph of the function will exist a break at a point of discontinuity. कहीं भी एक ग्राफ पॉइंट क्रिएट हो सकता है. ठीक है ना? The graph is shown in the discontinuity at x equal to 1, 2 और 3 पर discontinuous है. राइट? यू आर वॉचिंग है ब्लैक शार्प है लेकिन आगे बढ़ा तो गैप हो गया, फिर यहाँ पर गैप है, देन आफ्टर यहाँ पर भी गैप है. इन पॉइंट्स पर पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर और पॉइंट 3 पर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL के इक्वल नहीं है.
राइट। यस, नेक्स्ट ये फंक्शन के कंटिन्यूस के लिए होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स। ये कंडीशन होती है फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन वहां पर क्रिएट होगी कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। We're going to be taking a look at limits and continuity using driving to a restaurant as the example. Brought to you by mathrhythm.com. There are three main types of limits that we're going to take a look at today. 1. The case where the limit exists and the point exists. 2. The case where the limit exists but the point does not exist. And 3. The case where both the limit and the point do not exist. Let's say you and I want to meet for lunch, but we work at opposite ends of town from each other. So we decide we're going to meet someplace in the middle. How about someplace nice? So we decide to drive to the restaurant. Each of us driving along the road representing the limit to the restaurant representing the point. As we can see, the limit exists, the road leading to the restaurant existed. The point, the restaurant itself exists, and it is in the location we expected it to be in. So this is the case where both the limit and the point exist, which is good news for us because it means we can sit down, have a nice meal, and catch up. Now let's take a look at the second scenario. This is a very important one to consider. This is the case where the limit exists, but the point does not exist. This is a little bit different from what you might have seen in algebra, and only really happens in a calculus course. So in this case, again, you and I decide we're going to drive from opposite ends of town and meet at our favorite restaurant in the middle. This time, the road did in fact exist leading to where we thought the restaurant should have been, but when we get there, we discover, wow, there's an empty parking lot here. The restaurant had actually moved down the road, but neither one of us could remember that. Well, at least we agreed on where we were supposed to have met, and now we're sitting in an empty parking lot together. So, what do you say? Let's find a new restaurant and go eat there instead. So in this case, we've discovered that the limit existed. Our road leading to where we thought the point should have been existed, but the restaurant itself was not in fact there. So this is a case where the function does not exist in that location, however the limit does exist. And if the function exists, it simply doesn't exist in the same place that the limit does, so we'll get two different values. One value for the limit, one value for the function. In this third case, neither the point nor the limit actually exist. Unlike the previous example where we drove from opposite ends of town and wound up in an empty parking lot together, where we were at least agreeing on the location of the point even though the restaurant had moved, in this case, it would be like driving from opposite ends of town from each other, both of us forgetting where the restaurant was located and winding up at different locations. Neither of us is in the same parking lot together, the restaurant is not at either of our locations, and therefore we miss out on lunch and don't get to eat today. So sad. This is a non-replaceable discontinuity, meaning we cannot fix this scenario. The point is simply not at either of the locations, and the limit from the left-hand side and the limit from the right-hand side do not agree on the location. So the limit does not exist. This is a very important distinction to make. If you found this video interesting, or at least found it helpful, you can find more videos and examples at mathrhythm.com. If you feel like you need a little additional help, that's okay too. We offer both online and in-person tutoring. Services. Now we have to study continuous function. A function fx is said to be continuous at x equal to where a is the element of domain of fx. जो डोमेन दिया हुआ है उसका एलिमेंट्स है, ठीक है ना. इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a minus fx equal to limit extends to a plus fx equal to fa, that is LHL equal to RHL equal to value of the function at x equal to a, or we can say limit extends to a fx equal to fa, right? Now there are few properties of the continuous function. If there are two functions fx and gx, ठीक है ना, तो उनके कंटिन्यूस होने के लिए x इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना. सी एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू ए वेयर सी इज एनी कांस्टेंट. अगर किसी भी फंक्शन के साथ किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस इसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा. अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना. अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस है और उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तब भी उनका वैल्यू उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, राइट. दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिवाइड कर दिया जाए, दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिवाइड कर दिया जाए तब भी वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे. लेकिन कंडीशन है कि जीए शुड नॉट इक्वल टू जीरो. डिनोमिनेटर पर जो वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट.
नेक्स्ट है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी सच दैट एफ ए एंड एफ वी आर अपोजिट साइंस, राइट। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, मतलब कोई अगर एफ एक्स एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस है और एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं, ठीक है ना, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज को। अगर किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया है तब भी वो फंक्शन उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस रहता है। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। अगर दो कंटिन्यू नेक्स्ट है हमारा, अगर टू कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। दो नेक्स्ट है हमारा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिवाइड कर दिया जाए, कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो तब भी वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ वी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कंटिन्यूस है और वहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट वी जो आ रही है वो अपोजिट साइन की आ रही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। तो आज हमने पढ़ा फंक्शंस की कंटिन्यूटी के अबाउट। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है, डिसकंटिन्यूटी की क्या क्या कंडीशन है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, हम कैसे कंटिन्यूस फंक्शन को लगाने के लिए किस रूल का फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक और रिवाइज कर लेते हैं कि जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होते हैं तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर उन दोनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। क्लियर, फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है उन तीनों वैल्यू में से किसी टू वैल्यूज के अनइक्वल होने पर। क्लियर, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन है जो हमने रीड करी थी और इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करना है और आई थिंक यू हैव टू मेंशन कर रहे होंगे आप सब लोग अपने नोटबुक, राइट।